Hi children, how are you? I am your Hindi ma'am, Revati ji speaking. Today we are going to see about our book Vasant book, part 14, Khan Pan Ki Badlati Tasveer. That means changes of food. Then food culture. How nowadays how the food culture changed last 20 years or 50 years back. Nowadays how is it that? You see on the screen our lesson part 14 खान पान की बदलती तस्वीर. पिछले 10-15 वर्षों में हमारे खान पान की संस्कृति में खान पान की संस्कृति का अर्थ फूड कल्चर दैट इज एक बड़ा बदलाव आया है. बदलाव का अर्थ चेंजेस. डियर चिल्ड्रन, here I am not underline the difficult words, but you listen to very carefully. After last part of this video, I will given in Angrezi arth, English meaning, difficult words meaning. So you listen very carefully. Again I read the same. पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है. Already I told खान पान की संस्कृति का अर्थ food culture and badlav changes. Bada badlav, big changes. In the last 15, compare than last 10 or 15 years, nowadays the food culture should be changed, a big change. इडली, डोसा, बड़ा, सांबार, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है. You know that in our South Indian people, what we have to take for dinner, idli, dosa, buri, pongal like that, and sambar, rasam in a midday meals like that. It is not only South Indian peoples. It should be spread in all over India. ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है. These food items are nowadays available in North India also. उपलब्ध का अर्थ available. और अब को उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैली चुकी है. You know that Daba Samskriti in Uttar Bharat, it is very famous. That is the kinds of food items. This also spread very effectively for all the states. अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, सागा आपके मिल ही जाएंगे. Not these food items. What are them? That is roti, dal, saga. These items not only in the north side, in wherever we send and get this food item, we can eat. Next, fast food. That means turant bhojan. Nowadays it is very spread every corner of the street. Fast food. चलन भी बड़े शहरों में खूब बड़ा है. I told no, nowadays fast food it's increased each and every corner. इस फास्ट फूड में बर्गर क्या क्या में इस फास्ट फूड में क्या क्या आइटम्स डिशेस इज दैट बर्गर नूडल्स जैसी कई चीजें शामिल है. दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन फास्ट फूड. एक जमाने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे. Everyone known to that Chinese noodles. For example, you go and ask in a small children Chinese noodles, they know very well Chinese noodle. And next paragraph, you see that on the screen, 2 minutes noodles. You know that in a ad also we saw in a 2 minutes noodles. 2 minutes noodle के पैकेट बंद रूप से तो कम से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं. Every children ask to mummy 2 minutes noodles. It is very fast and quick food. So this food known to every small children to up to in a old age people also. They well known this noodles 2 minutes noodles. इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले बावजूद का अर्थ प्रेजेंट. इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद है. Similarly, local food, नमकीन के कई तरह that means of snacks, local food
is also one still present now. Lekin aloo chips, like that aloo chips, potato chips, that is कई विज्ञापित रूप में तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं. In a packet food, have you seen that in a market or in a stationery? Sorry, not stationery, in a grocery shop. Next paragraph. गुजराती ढोकला गाटिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं. The one more food in Gujarati peoples, that is ढोकला गाटिया. It is very famous. It is a part of in our food. बंगाली मिठाइयों की केवल रसभरी चर्चा ही नहीं होती कि वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध है. It is not only a particular place, it is everywhere. All the places are available. Which one is the Bengali mitaiya? In all cities and all the places also this food available. यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों को व्यंजन पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में मिलते हैं और मध्यवर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है. दैट इज द लोकल रेसिपी. स्थानीय व्यंजनों, उसका अर्थ क्या है? लोकल रेसिपी, साथ ही अब अन्य प्रदेशों को व्यंजन. इन अ लोकल रेसिपी प्लस एंड अनदर फूड आइटम्स आल्सो इन नाउ अवेलेबल फॉर ऑल द प्लेसेस. एंड मध्यवर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है. Food diversity has made its way into middle class peoples. Dear children, you see on the screen, you see that in idli, sambar, dosa, vada, some like this food. These all are in a South Indian food, but nowadays in all over India, they food available. Now you see the next paragraph, the next page. You see on the screen now. The one more food, that fast food I told no. You see burger. This is called a burger. You see. कुछ चीजें और भी हुई है. मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी, वह कस्बों तक पहुंच चुकी है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ भारतीय घरों में सेंकी चली जा रही है. दैट मीन्स कस्बों का अर्थ द टाउन्स. In before days, the bread, you know that bread is not only for in a साहबी, न केवल साहबी ठिकानों में मिलता है. अब आज कैसे है तो इन बड़ी बड़ी टाउन में, बड़ी बड़ी शहरों में भी ये स्प्रेड किया है नाश्ते के रूप में. इन अ टिफन, इन अ मैक्सिमम पीपल्स इन अ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट टेक दिस ब्रेड एंड जैम. यू नो ऑलरेडी लाखों करोड़ पीपल, भारतीय पीपल आल्सो अपनी घरों में ये टिफिन के रूप में खाते हैं. किसे? ब्रेड. खान पान की इस बदली हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानते हैं. दिस फूड कल्चर चेंजेस not only in a upper class people, in a lower class people also who know very little about the local recipe of the past. पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है. But all the peoples, everyone should know about in a new food. कई नए व्यंजनों, different kinds of recipes. स्थानीय व्यंजन भी तो अब खटकर कुछ ही चींचों तक सीमित रह गए हैं. Even local recipe has now what that I saying चींचों तक सीमित रही है. Sorry, again I recall that. स्थानीय व्यंजनों भी तो अब घटकर कुछ ही चींचों तक सीमित रह गई है. That means even local recipe has now come down, cut down for reducing to few other things.
Bombay ki pav bhaji. You know, have you heard that name pav bhaji is very famous in Mumbai and Delhi. Chole kulche. In Delhi, very famous in chole kulcho. कि दुनिया पहले की तुलना में बड़ी जरूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है. That is, chole kulcho have increased more than before nowadays. Sthaniya vyajana in local food. What are they? The chole kulcho or pav bhaji. Mumbai ki pav bhaji. The next. अन्य जानकार ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के फेटे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही है. Experts are for some people are known to very different kinds of food item. That experts tells that where is Agra snacks, that is the pete namkeen, where is it? Some people are asked like this, यानी जो चीजें बची भी हुई है उनकी गुणवत्ताओं में फर्क पड़ा है. But it is all a different food, but in a quality has different according to season. These food items all generally has different, but according to the season. Next one. फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे. Sometimes we make the food according to the season and climate. The food should be changed. Make them different kinds of food. उन्हें बनाने का फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है. How many people have been made here to more than these items. अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाने छीलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है. Some peoples in a homemaker, that is a housewife, गृहिणियों और कामकाजों, workers in a catering worker, no, that is गृहिणियों का अर्थ homemaker, then कामकाजी working in a cook, chef, like that chef. महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाने, you know the खरबूजो, that like a fruits, that is बीज सुखाने छीलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना है. What are they doing? He peel off खरबूज and make from that preparing some dishes. It is very tasty food. यानी हम पाते हैं कि एक और तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वे ही देसी विदेशी व्यंजनों अपनाए जा रहे हैं. यानी हम पाते हैं whenever we get that some local recipe it's reduced and दूसरी ओर वे देसी विदेशी व्यंजनों अपनाए जा रहे हैं. Local foods are reduced and other district अन्य व्यंजनों other food are increased now. जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो, it is very easy to make for preparing. जटिल प्रक्रियाओं वालों चीजों तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती है. Now some days now some process are making in a book. You know that in a cook food samayal puttagam in Tamil. So some people are follow that cook food. अब शहरी जीवन में जो बाग माँ बाग है उसे देखते हुए एक स्थिति स्वाभाविक लगती है. दिस इज नेचुरल. अब शहरी जीवन में जो बाग माँ है उसे देखते हुए एक स्थिति, दिस पोजिशन इज वेरी नेचुरल. सम पीपल्स आर डोंट नो टू हाउ टू प्रिपेयर डिशेस एंड मील्स, सो दे आर फॉलो टू cook food book for preparing food. फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीजों से धीरे धीरे वंचित किया है. ओवरवेलमिंग, फिर कमर तोड़ महंगाई, overwhelming has gradually for slowly the food items are increased.
जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेंगे। अगेन आई टेल, जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेंगे। Who would not think for this time for about cooking the dishes without which they do not task? Are you understand now? The next one. खान-पान की जो एक मिश्रित संस्कृति का अर्थ मिक्स्ड कल्चर। खान-पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है। इन फूड कल्चर कम टू मिक्स्ड कल्चर, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी है। इट इज आल्सो पॉजिटिव साइड। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध है। नाउ दीज पीपल्स, गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं के लिए कुछ जल्दी तैयार करने वाला फूड भी, खाना भी, वो व्यंजनों भी अब उपलब्ध है। उपलब्ध का अर्थ अवेलेबल। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है। इन न्यू जनरेशन हैज गॉट सपोर्ट टू नो दैट दिस रेसिपी, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन इन्हें निकालिश रूप में उपलब्ध नहीं है। दैट मीन्स इवन if for same reason and specific forms for this, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में। नेक्स्ट पैराग्राफ। आजादी के बाद, आफ्टर फ्रीडम, आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस, उद्योगधंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है। न्यू एक्सपेंशन, नया विस्तार का अर्थ न्यू एक्सपेंशन। उद्योगधंधा, दैट मीन्स इंडस्ट्रीज एंड जॉब, नौकरी वालों, वो देयर हैज बीन अ न्यू एक्सपेंशन ऑफ दिस। उसके कारण भी खान पान की चीजें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची है। हाउ दिस फूड आइटम स्प्रेड टू वन कंट्री टू अनदर कंट्री, ये इंडस्ट्रीज और नौकरी वाले इनकी कारणों के द्वारा खान पान की बदली एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को पहुंची है। बड़े शहरों के मध्यवर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफिन के वक्त बच्चों के टिफिन डिब्बों खुलते हैं तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। You know that nowadays the school provide food, that is tiffin depot, not only in cities, in all the places. Whenever you go and see in nowadays the school provide morning tiffin also, then some schools provide only midday meals. So that is the meaning of this line. बड़े शहरों के मध्यवर्गीय स्कूलों में, इन मिडिल क्लास स्कूल, जब दोपहर का अर्थ है आफ्टरनून, टिफिन के वक्त बच्चों के टिफिन डिब्बे खुलते हैं तो उनसे विभिन्न प्रदेशों से व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। डिफरेंट रीजन आल्सो it should be followed this. हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं कि वी नो ईच अदर बाई कैटरिंग। खान पान भी एक दूसरे को जानते हो। इस दृष्टि से देखे तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। दैट मीन्स फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, इन द न्यू कल्चर ऑफ फूड वेयर also find new seeds for national unity. Again I tell this one, हमें खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। We know each other by through this catering. इस दृष्टि से देखे तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए
नए बीज भी मिल सकते हैं. That means from this point of view, in the new culture of food, we can also find new seed for national unity. And next, बीज बली भांति तभी अंकुरित होंगे तब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीजें को और भी ध्यान देंगे. When we pay attention to other things related to food and drink. बीज बली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीजों की ओर भी ध्यान देंगे. What is that meaning? When we pay attention to other things related to food and drink. मसलन for example, मसलन का अर्थ for example in a new word. हम उस बोली बानी, भाषा भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज्यादा जानेंगे. For example, we know that our languages and dresses for all किसी ना किसी रूप में. For however we identify that in one time, जो किसी खान पान विषय से जुड़ा हुई है. For all our dresses and languages are also it should be different, but खान पान विषय से जुड़ी हुई है. Then food also it's separate. जुड़ी अर्थ separate. इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन पड़ा है. That means at the same time, इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि at the same time it is important to revival of local recipes also necessity. That is called ethnic. ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचार नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए. Again I read this one. ऐसे स्थानीय व्यंजनों, this local recipes केवल 5 सितारे होटलों के प्रचारक नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए. That means such a local recipes should not be left only to the promotion of 5-star hotels. अच्छी तरह बनाई पकाई गई बूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाजारों से गायब हो रही है. गायब का अर्थ मिसिंग. Some items, some recipes, dishes are missing in a market. What are they? पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ. These foods is not missing in a market. मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं? Where we get in a season food. उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है. मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं? In a what is that? Samosa. In where should we get? That is seasonal samosa. उत्तर भारत में अवेलेबल व्यंजनों के भी दुर्गति हो रही है. In a north side available these food all are in a season only as given for recipes. So where we will get these food items? Dear children, you see on the screen in our book also these recipes are printed. See samosa and I think some more items, sweet items these all are available in a where Uttar Pradesh or in a north side. You see the next one. अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीजें गली मुहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है. That means it is not a surprising that things used to be common street shop in a North India and उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है. They now search special shop. यह भी एक कड़वा सच है. It is also this is a bitter truth for कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीजें अपना ली है. That means we have abandoned में local
dishes due to so-called modernity. This is called modernity, and adopted may such things in imitation of the West. The next, और पश्चिमी की नकल में बहुत सी ऐसी चीजें अपना ली है जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है, which taste is not very favorable for us in terms of health. हो यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे। अक्सर प्रतिभोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती है। Again I read this one. हो यह भी रहा है, it has also been खान पान की मिश्रित संस्कृति, इन द मिक्स्ड कल्चर ऑफ फूड हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे। In the mixed culture food we are not able to taste them real and different things for search, और प्रतिभोजा का मतलब सर्च, और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीजें रख दी। इन whenever we go, our parents or in our some peoples are go to parties, then all the food items are keep in the plate at the same time, उनका स्वाद गडमड होता रहता है। खान पान को मिश्रित यो विविध संस्कृति हमें कुछ चीजें चुनने का अवसर देती है। The learned culture gives us the opportunity to choose few things. We are not taking advantage. We others serve same plate. Again I tell the same. हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते थे। Again I read this same paragraph. You read, you see very carefully. हो यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे। अक्सर प्रतिभोजों और पार्टियों में एक साथ ही ढेरों चीजें रख दी जाती है और उनका स्वाद गडमड होता रहता है। It has also been that is in the mixed cultural of food we are not able to taste the real and different things. प्रतिभोजों का अर्थ सर्च, और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीजें रख दी जाती है और उनका स्वाद गडमड होता है। Whenever we go to the party, we will see that in a many different kinds of food items in a one plate. The taste also is good or not bad. खान पान को मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीजें चुनने का अवसर देती है, हम उसका लाभ प्रायः नहीं उठा रहे। What is that meaning? The learn cultural gives us the opportunity to choose few things. We are not taking advantages. We often serve the same plate. और हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते थे। Many times when to serve dishes of very opposite nature, it is good or bad, you think and decide it. इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यह रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह से जांचते रहना जरूरी है। Again I read the same line. इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है, therefore the mixed diverse culture of food लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है,
उसे तरह तरह से जांचते रहना जरूरी है. Therefore, the mixed diverse culture of food has been formed and itself that this is going to be more developed. It is necessary to remind it various kinds of investigation. So, dear children, I hope you understood this lesson. I didn't underline the difficult words in this video, but you to underline some difficult words I given in the last part of this video, and some exercise also. Angrezi Arth, what are the meaning? For example, Gadwa such, that is bitter truth, and another one is many Pratibhoja search, Achraj for not surprising. Some meanings are in Angrezi Arth I given in the last part of this video, and I hope you all understood this one. Dear children, I told some meanings, difficult words meaning you see on the screen, but I didn't underline in our video. Just you listen carefully, underline your book that difficult words and write their English meaning in your book. Is it clear? Now you see on the screen. The first one, Khan Pan ki Samskriti, that means food culture. Upalabd, available. Shamil, included. Ajnabi, strange. Again I recall this one, Khan Pan ki Samskriti, food culture, Upalabd, available, Shamil, included, Ajnabi, strange. Now you see fifth one, Masalan, Masalan ka arth, for example, Maujood, Maujood ka arth, present, Vinyapit, advertisement, Sthaniya Vyanjano, local recipe, Madhya Vargiya, middle class. Again I recall from 5th onwards, Masalan, for example, Maujood, present, Vinyapit, advertisement, Sthaniya Vyanjano, local recipe, Madhya Vargiya, middle class. Now 10th one, Kasbo, the towns. Kasbo ka arth kya hai? The towns. Now you see from 11th onwards, Prabhavit, Prabhavit ka arth to eager, Tulna, to compare, Mausam, Mausam ka arth season, Kamkaji, Kamkaji ka arth working, Karbuje, muskmelon. Again I recall the same from 11th to Prabhavit, to eager, Tulna, to compare, Mausam, season, Kamkaji, working, Karbuje, muskmelon. And you see from 6th, Kamartod, Kamartod ka arth staggered. 17th one, Misrit Samskriti, mixed culture. Then 18th one, Sakaratmak, positive. Azadi, freedom. Udyog Danda, industries. Again I recall the same. Kamartod, staggered. Misrit Samskriti, mixed culture. Sakaratmak, positive. And Azadi, freedom. Udyog, Udyog ka arth kya hai? Industries. 21, Naukariyon, workers. Then you see the 22, from 22, Tabadalon, transfer. Madhya Vargiya, middle class. Dopahar, afternoon. Punarudwar, restoration. 5 sitare hotelon, that means 5-star hotels. Again I recall Tabadalon, transfer. Madhya Vargiya, middle class. Dopahar, afternoon. Punarudwar, restoration. 5 sitaro hotelon, 5-star hotels. And 27, from 27, Achraj, Achraj ka arth surprising. Kadwa, such, bitter truth. Swad, taste. Swasthya, health. Naya Vistar, new expansion. Again I recall the same. Achraj, surprising. Kadwa, such, bitter truth. Swad, taste. Swad ka arth taste. Swasthya, health. Naya Vistar, new expansion. Dear children, again I recall this lesson once again in English. You see on the screen, be carefully.
in a 10 years, after 10 years, the food culture should be changed. A new expansion has come, like idli, dosa, sambar, rasam. It is not only limited in South India. It is available in every journey of North India also now. North Indian food, the dhaba culture of India has spread almost all over the country. Now, however, you find the North Indian roti, dal, dhaba, that fast food is available, very popular in big cities. This fast food includes many things like a burger, noodles, these all are. And Chinese noodles is very popular. Chinese noodles limited a few people in the past. And packet of 2 minutes noodle. 2 minutes noodle, you see that that 2 minutes noodles are at least familiar to children and all the age people. So many local types of snacks are still present, but many advertised increase the disease of potato chips are rapidly making their home. And Gujarati dokla, that is that very tasty, and Bengal sweet were not only raspberry discussed but more available than before in many cities. That is local cuisine, like a recipe, that is a new word, as well as cuisine of other states now often is very region. Then meats and food diversity has made its way into middle class life. Some things have happened even more. For example, the bread, bread, not only in cities, in all the towns and villages also it's know very well. And bread which has limited to the wedding venues only till the all over towns. And millions of crores of Indian houses are being fed the most from this changed culture of catering. Catering very well. There has been a new generation affected who knows very little about local cuisine of the past, but knows a lot about many new cuisine, local cuisine. That means, that is a new word. It is not that simply recipes. It is also reduced to few things. Now pav bhaji, in Mumbai, pav bhaji of Mumbai at Chola of Delhi. These also the kinds of recipe food. The word of kulche is definitely increased compared to the past. The word of other local recipes has become smaller. Experts also tell that where was the matter in Mathura's peda. Mathura's peda, it is very famous. And Agra's pet namkeen. That is the difference in the quality of things that have happened to the child. Then how many people have been to make the dishes and made by fruits according to the seasons and groups. Now has been really sad for working women to drink melon seeds and they prepare dishes from them. Is it clear? Now we find that it has decreased in the local cuisine and other recipes. Foreign recipes are going to town, going to own it. Those who have the facility to cook the complicated process, those things are sometimes prepared on the basic of manual in their lives. This situation seems natural in view of part that is the price rise has also deprived people of many things gradually. Without knowing the taste of the dishes they said about coming to make them not 4 or 5 times. Then catering, which has become a mixed culture, has its own positive side, and working women are now available with a different recipe of quick preparation. The new generation has got support to the recipes of country and abroad. For whatever reason, and in particular because if there is a truth that is not available as a variety of dishes.
Now, due to this new expansion of the industries, business jobs after the independence, due to this new food, the food reached from one state to another state. The middle class and the middle class schools of big cities, when tiffin box, in our school also some maximum schools provide in a midday meals. Middle class schools are provide in a tiffin or lunch. Anyone, we smell the delicious of different region from them. If we know each other from each other, we can see that in the new culture of mind we can get new seeds of national unity. We will sprout well only when we pay attention to other things related to food. For example, we will know more in some form of the spoken language, etc., which is associated with the some food abroad. At the same time, it is important to note that the revival of local recipes is also necessary, which has been called upon to say that the dishes should be left only to promoters of 5-star hotels. If it is disappeared from the markets, it will be unfortunate. Well-made bangles have been given away from the market. Now the samosa filled with seasonal vegetables are also found. Where are the delicious this food available in North India? It is not surprising that in North India, things which were common in street shop are searched in special shop. It is a bitter fact. Yes, it is a kadwa sachige kya. It is a bitter fact that in many places we have left the dishes due to so that called modernity and many of the Western copying. Is it clear? Is it right or not? Has adopted such things that our taste is not very favorable in terms of health and hygiene. Whether or not we have been able to get real and different taste of things many times in the mixed culture of catering. Often send them what I tell no, the learned culture gives us the opportunity to choose a few things. We are not often not taking advantages of it. We often want to serve dishes of many different and of very opposite nature in the same plate. Hence, the diverse culture of catering is made, and the last has been that if it going to develop more, it is necessary to keep it in one side with a wire, one side. Therefore, the mixed diverse culture of food has been formed and itself that things is going to be more developed. It is necessary to remain in various kinds of investigation. Dear children, again I hope you all understood this lesson. If you have any doubt, you ask to me. Thank you, ma. Dhanyavad.